Hello there, everybody. Welcome back to the channel. Today we're going to be watching and reacting to an Alpha Defense video. A lot of you have recommended that and wanted me to go ahead and watch a few more of their videos. So we're going to go ahead and watch the recent one, which I believe is on Pakistani jets. So we're going to learn a little bit about that. But before we get into that, I will say people keep referencing me to an Alpha Defense English channel. I am unable to find it. As you can see here, I've typed in Alpha Defense English. It doesn't show up. So I don't know if it's like geo blocked. I'm in the US, so yeah, I don't know if it's blocked here for whatever potential reason, but the only channel I'm able to find is Alpha Defense Hindi. And if we go to like his other channels down here, Conflict X, he hasn't uploaded anything to this one in, well, I guess he uploaded in 20 hours ago, but prior to that, it was 2 months ago. And then Frontliner, which this one was 4 weeks ago. So I don't know what to say. I don't know what to say. This Alpha Defense Hindi video or Alpha Defense English channel, I just don't see it. I don't see it whatsoever. So we're going to go ahead and watch this one right here. Pakistan lost 6 aircraft in air and 3 high-value aircraft, HVAs, high-value aircraft. All right, let's learn a little bit more. Let's learn a little bit more, shall we? Now, here even okay, so I haven't pre-watched this or anything. I just don't like how the front is like super blue, so it turns my face super blue. So I had skipped to this image so my face wouldn't be blue. And I saw down here Alpha Defense English. And I was like, God, what are you talking about? There is no Alpha Defense English. I can't find it. So if someone could link me the Alpha Defense English channel, if possible, let me know, because I'm not seeing it. So we're gonna watch the Hindi, which is fine. Which is fine. I know some Hindi. Like listen. I've been I've been listening to Hindi for like a year now. One would assume that I would be able to understand some Hindi. And English typically is what's usually spoken as well, so it's pretty easy to understand. And then of course subtitles are okay. They get the concept around. Okay. So yeah, we're gonna watch this. Link to this video will be in the description down below, everybody. And without any further ado, let's go ahead and watch it. आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट लॉस के बारे में। आप सभी ने नोटिस किया होगा कि पाकिस्तान की तरफ से केवल बात की जा रही है एयरक्राफ्ट लॉसेस को लेकर, लेकिन अगर they're just parroting. India lost 9 aircraft. They lost 11 aircraft. They lost 200 aircraft. The center of gravity sucked in their entire air force. रियलिटी में आप चीजों को समझने की कोशिश It's all करेंगे over तो आपको social समझ media, में आएगा guys. कि It's all over social media, guys. It's real if it's all over social media. पहले भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है और इस इनिशियल अटैक के दौरान भारत ने पाकिस्तान एयरफोर्स या पाकिस्तान आर्मी के किसी भी टारगेट को टारगेट नहीं किया था और भारत के जो स्पेसिफिक टारगेट्स थे वो टेररिस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड्स थे। हालांकि इस अटैक के बाद में पाकिस्तान की तरफ से भारत के मिलिट्री टारगेट्स को टारगेट करने की कोशिश की थी और इस कोशिश में पाकिस्तान पूरी तरीके से विफल रहा था। आज तक पाकिस्तानी फोटोशॉप कर करके फोटोग्राफ्स दिखा रहे हैं और ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भारत के किसी बेस को हिट कर रहे हैं। उसके बाद भारत की तरफ से पाकिस्तानी मिलिट्री टारगेट्स को टारगेट किया गया था, क्योंकि पाकिस्तानी अटैक को भले ही भारत ने डिफेंड कर लिया था, लेकिन उसको लेकर एक रिटेलिएशन जरूरी था, जिससे पाकिस्तान को अपना मैसेज मिले कि अगर वो भारत में किसी भी मिलिट्री टारगेट को टारगेट करेंगे तो उसका रेस्पॉन्स किस तरीके का आएगा। भारतीय वायुसेना की तरफ से पाकिस्तान में 25 टारगेट्स को टारगेट किया गया है। इसमें हैंगर्स हैं, एयर बेसेस हैं, रेडार साइट्स हैं और अंडरग्राउंड फैसिलिटीज भी हैं। Is this legit? Is this the runway destroyed in one of the attacks? वायुसेना ने पाकिस्तान एयरफोर्स के कई बेसेस के रनवेज को भी ध्वस्त किया था ताकि वहां से पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ऑपरेट ना कर सके। ऐसी स्थिति में भारतीय वायुसेना को चैलेंज करने के लिए हवा में एयरक्राफ्ट भी नहीं थे और अगर भारतीय वायुसेना केवल स्कोरिंग चाहती तो वो हार्डन शेल्टर्स के ऊपर बॉम्ब गिरा सकते थे। नेचुरल है कि इन सभी टॉपिक्स के ऊपर अगर पाकिस्तान बात करता है तो पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग हो जाएगा और इसी वजह से वो लोग केवल रफाइल के ऊपर बात कर, जी हाँ, रफाल नहीं, रफाइल। शुरुआत से ही भारतीय वायुसेना की तरफ से फोकस केवल ऑब्जेक्टिव को लेकर था और भारतीय वायुसेना की ब्रीफिंग में कहा गया था कि भारत की तरफ भी लॉस हुए हैं और पाकिस्तान की भी तरफ लॉस हुए हैं। लॉसेस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा होते हैं
लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे तो Okay, so do we know, is there been official confirmation about actual Indian jets that were quote unquote destroyed? Because when the defense guy, the CDS, um, he said downed. He didn't. That doesn't necessarily mean destroyed. भारतीय वायुसेना की तरफ से पहले सभी आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया था, जिसमें लश्कर ए तौयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन भी इंक्लूडेड था। लेकिन उसके अगले दिन जब पाकिस्तानी मिलिट्री को टारगेट किया गया था, तो पाकिस्तान एयरफोर्स ऐसी सिचुएशन में थी कि वो कॉम्बैट एयर पेट्रोल भी नहीं कर पा रहे थे। उनके रनवेज के ऊपर गड्ढे थे, उनके रेडार साइट्स डिस्ट्रॉय हो चुके थे, उनकी एयर डिफेंस यूनिट्स खत्म हो चुकी थी और कमांड एंड Yeah, कंट्रोल सेंटर से those Chinese air defense systems were not able to stop them. We're not able to help them, I should say. They failed entirely for Pakistan. लेकर एमिनेशन डिपो तक सब कुछ वेपराइज हो चुका था। इस सिचुएशन के बाद में पाकिस्तान के पास में केवल दो ऑप्शंस थे, एक ऑप्शन सीज फायर का और दूसरा ऑप्शन न्यूक्लियर वाला। लेकिन न्यूक्लियर को लेकर भारत की फिलॉसफी भी क्लियर है कि पहले भारत न्यूक्लियर बॉम्ब यूज नहीं करेगा, लेकिन अगर किसी ने न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करने की कोशिश की तो भारत की तरफ से उस एनिमी का कंप्लीट डिस्ट्रक्शन किया जाएगा और अपनी फुल माइट के साथ में न्यूक्लियर बॉम्ब्स का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पास में सीज फायर ही एक ऑप्शन था, लेकिन फेस सेवर के लिए पाकिस्तान की तरफ से एयरक्राफ्ट लॉसेस के ऊपर बात करना शुरू कर दिया गया था और भारत की तरफ से वो कॉन्वर्सेशन इस वजह से अवॉइड की गई कि अगर और ज्यादा डिटेल्स भारत ने देना शुरू कर दिया तो पाकिस्तान के पास में किसी भी तरीके का फेस सेवर नहीं रहेगा। लेकिन अब धीरे धीरे मीडिया में इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही है और कल ANI की तरफ से एक रिपोर्ट दी गई थी जहां पर कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताई गई। पहली चीज, भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के लगभग 6 फाइटर जेट्स को हवा में मारा है। इसके अलावा भारत की तरफ से S-400 ट्रायम्फ का प्रयोग करते हुए पाकिस्तान का एक हाई वैल्यू एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय किया है, जो या तो साब एयरआई है या उनका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जो दासो फाल्कन के ऊपर बेस्ड है, जिसका नाम है DA-20। आप सभी को याद होगा जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो एक न्यूज निकल कर आई थी कि हवा में एक साब एयरआई मारकर गिराया गया है और मोस्ट लाइकली यहाँ पर उसी सिस्टम की बात हो रही है। हम लोगों ने इनफैक्ट पाकिस्तान के अंदर 40 N6 मिसाइल को एक्सप्लोडेड देखा है और अगर एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम जैसे एयरक्राफ्ट के ऊपर इस तरीके की मिसाइल सिस्टम चलाई जाएगी तो इन एयरक्राफ्ट के पास में बहुत ज्यादा काउंटर मेजर्स होते नहीं। इसके अलावा भोलारी के हैंगर में हम लोगों ने एवैक्स के टुकड़ों को बाहर गिरा हुआ। Look at this. Okay, so here's some more satellite proof. You know, when India shows proof, they show satellite proof. When Pakistan talks about proof, they say, look at the social media posts. So we have verified proof here, huh? Look at this absolute destruction on this munition depot, airbase, whatever this hangar is here. Some damaged planes on the ground. हुआ देखा और नूर खान में जो C-130 डैमेज हुआ था उसके तो आप सभी ने वीडियोस भी देखे। ओवरऑल यहाँ पर पाकिस्तान के 9 एयरक्राफ्ट का कंफर्मेशन आया है और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हम लोगों ने बोलारी के हैंगर में एक F-16 जला हुआ सैटेलाइट से देखा था। यानी कि आगे चलकर ग्राउंड पर जो फाइटर जेट नष्ट हुए हैं उनके नंबर्स आना शुरू होंगे तो पाकिस्तान के लॉसेस की एक नई स्टोरी खुलेगी। यानी कि हार्डवेयर लॉसेस को लेकर भी पाकिस्तान ने यहाँ पर We'll never know. They'll never release that information. We all know that. They'll never release it. इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद। All right. Well, that's the end of the video there. Yeah, we'll never know. Well, it's interesting to see. So at least 6 were shot in the air. Okay. And then there's even more here. Okay. Via satellite image. I mean, so the damage is probably way more astronomical than we probably even know. I mean, if this entire hangar here was destroyed, like what could be in there? Like how much damage? I mean, we can see the size of this hangar. Look. So we have this is the same hangar right over here. And look at the size of this plane right here in comparison to the hangar. So, like, what's in that hangar? Yeah. All right. Well, again, link to the video will be in the description down below. Please go and check it out. I'm going to read some of the some of the comments here. One of kind army is so professional and transparent, and the other kind of army is unprofessional and opaque. Opaque's a good word. Opaque's a good word. You can kind of see, but it's so fuzzy you can't really see at all. It gives you the fake sense that you can see.
Operation Sindoor is still haunting Pakistan mines. Also, they lost more than 10 UCAVs. Asif Manure and failed Marshall. The day is not far when they will say they made Rafale not all fall. In view of lack of dams in Pakistan, India has built some small dams using Brahmas. Oh my god. Oh my god. What is the use of the ceasefire without capturing even a single POK post? At least some POK posts should have been captured. Pakistan occupied Kashmir. Yeah, that would have been something. I'm hearing from locals 5 posts which were on heights in Mindar have been taken. What? Should have announced to India? Source, Indian Cartoon Media. Next time it will be Pakistan lost 6 warships in Indian Navy raid. Do they really have 6 working ships? What? Pakistan lost following assets. 6 jets including... Huh? I don't understand what he's saying here. Maybe it's just like context isn't working in my brain. Ceasefire is done not for Pakistan but for illegitimate father U.S. Ceasefire gave them time to shift their assets, which they secretly kept at different Pak bases. The war turned out to be the biggest setback for U.S. This is why they're now talking in different language. Please explore this angle intimately. So the only gripe I have against this is if that were the case, Trump would be talking about it like nonstop. If this was the case, if the U.S. was still there, and with China being so prominent, I think it would more than likely the Chinese were there. Is the chances of the Chinese military being there is way higher than the U.S. military. Now, yes, the U.S. military did operate out of the Nurkan base since 2001 to an unspecified time. It's never mentioned when that time ended, but yeah, they did operate there out of 2001. But now, Pakistan's operated and funded and is an arm of China. So. Best way to counter the outrage that was coming after admission of jets being downed and these people still believing in high-tech planes seriously. Next level Bollywood shit, but trust me, bro, Pakistan won. Your information might not be up to date. There are at least 9 Pak jets. Pakistan didn't lost a single jet. Pakistan and forces are world number 1, so don't trust any other sources of news except our own ISPR Pakistanis. I want to read some of the new comments. Let's go and take a look at some newer comments. Source, trust me, bro. Okay. Goaty Media. Did he say anything that was like pro BJP or pro Modi? Like, this was all nothing but facts. Goaty Media? You can't just label everything Goaty Media. That's so weird. That's so weird. First, your channel, you said no Indian aircraft is being shot down by Pakistan. Now, world knows that Indian jets are being shot down by Pakistan. Now, another joke. Pakistan jets are destroyed, but without proof as always. Stupid Indians used to say. Again, this guy, it just doesn't understand. I think that person misspoke because unless there's been official confirmation that has come out, I really do think that he misspoke when he said down, because he said down and then he said all pilots were fine, and then he also said all the jets went back up in the air like 2 days later, right? So I think more than likely there was some damage and the jet had to be down, which means landed, and yeah. I talk about it in the other videos. How about our jet losses? Always proud of our armed forces. Pakistan aircraft losses. Frustrated. What is this? The truth is this: India fired missiles to save its honor. After that, I said that we also replied. In reality, the Indian had brought its ship 300 kilometers back.
Pakistan should not be beaten? What? This doesn't even translate here, but I can see Joker Media. Okay. The Indian jet fell and became news all over the world. If Pakistan jet had fallen, the world would have reported it. Best way to counter the outrage that was coming after admission of jets being downed, and these people still believing in a high-tech plane. Seriously, I already read that. All right, well, interesting video. Interesting video, and I can't find Alpha Defense English, so let me know if you can find it. But I don't mind listening to the Hindi channel either, so with that being said, I'll catch you on the next one, yeah? Link to the video will be in the description down below. Take care, goodbye.